हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में द डेली हिंदू एनालिसिस हम करेंगे अक्टूबर 23 2021 का। टू सी द वीडियोज ऑफ डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ एवरी डे प्लीज सब्सक्राइब टू मनी लॉ क्लासेस ऑन यूट्यूब। सो आज चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट है, सम ऑफ द न्यूज़ विच आर इम्पोर्टेंट आर दैट नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट, जो जिसके लिए अभी इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, व्हाई इट इज़ नॉट गिविंग एंड व्हाट आर द issues, complex issues involved in climate negotiations, ये आज हम देखेंगे। Then we will see the importance of theater level command in India. What are the other countries who are following the theater level command in their defense of the country? फिर हम देखेंगे about US and Taiwan, that US president, the 46th president of the United States, Joe Biden ने उन्होंने कहा है कि they in every condition they are going to protect Taiwan from the Chinese inclusion into their air defense zone. द नेक्स्ट विल बी अबाउट द एयर बबल एग्रीमेंट, ये क्या होता है और अभी क्या इसकी स्टेटस है, इंडिया का कितने कंट्री के साथ एयर बबल एग्रीमेंट है, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड देन ऑन द इकोनॉमिक्स पेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट द member of the monetary policy committee. Now he has highlighted that there are certain problems when there is a transition of energy from coal based to green energy or renewable energy based. And currently there are certain problems in inflation. The long term inflation, that is core inflation, is still very high, and we need to factor in this before making a transition towards renewable energy. Now कल के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे मैं एक बार आपका रिवाइज करा देता हूँ। कल जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आए थे अबाउट द इंडियाज वैक्सीन माइलस्टोन, दैट इंडिया हैज अचीव 100 करोड़ वैक्सीन माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया। On January 16th, 2021, India started with its vaccination program. Currently, Sputnik 5 from Russia, Covishield from Serum Institute of India, and Covaxin from Bharat Biotech are currently under operation in India. Zycov D has got the approval. Johnson and Johnson has also got the approval. Moderna had got the approval, but it was later suspended. Now the next news which was important from yesterday's newspaper was that India's strategic petroleum reserve, हमने पढ़ा था कि due to rising prices of coal, India is considering to have a strategic coal reserve. Now this strategic coal reserve is based on India's strategic petroleum reserve. So India का जो strategic petroleum reserve limited है, which is at 3 places, Visakhapatnam, Mangalore and Padur. It has a 9.5 days of strategic petroleum reserve. जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है होती हैं लाइक IOCL, दे हैव द स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ऑफ 64.5 डेज. सो इन टोटल इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इज 74. नाउ आज के न्यूज़ की तरफ हम मूव करते हैं. द फर्स्ट न्यूज विच इज कमिंग इज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एरिया, दैट इंडिया इज वेइंग द नेट जीरो टारगेट अहेड ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. नाउ फिर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर इसको होस्ट किया जाता है. द कंट्रीज दोज हु आर सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, they participate in this negotiation. So the 26th conference of party is going to be held in Glasgow in United Kingdom. Now there are certain sticky issues in climate change diplomacy. The first is that there are some of the countries who have committed to net zero emission. Now what is this net zero emission? Net zero emission का मतलब होता है कि the country will attain the net zero emission of carbon dioxide. मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट करेगा उससे ज़्यादा इट विल take it out from the atmosphere. Now India has not committed to any net zero commission. In fact, India is going to update its nationally determined contribution, which we had done in yesterday's editorial also. India is going to modify its NDC and India has the 450 gigawatt of renewable energy target to be achieved by 2030. उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि why every country are targeting now the 1.5 degree Celsius, limiting the global warming to 1.5 degree Celsius. तो इसके लिए हमें पेरिस एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इट एम्ड फॉर लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 2 degree Celsius and ideally at 1.5 degree Celsius. Then in the start of September there was intergovernmental panel on climate change. It had released the report. It said that world should act very fast and they should try to limit the global warming at 1.5 degrees Celsius to avoid the irreversible impact of climate change. उसके बाद से क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे स्टार्टेड गिविंग द नेट जीरो एमिशन टारगेट. नाउ US हो गया, UK हो गया, फ्रांस हो गया, दे हैव ऑलरेडी गिवन द
net zero emission target of 2050. China has given the net zero emission target of 2060. अब इस न्यूज़ को देखते हैं, इसमें से हम अपने लिए कुछ एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं। तो देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, so that they want an annual $100 billion for mitigating the impacts of climate change. उनको एक annual $100 billion का fund चाहिए from developed country, so that they can approve those projects, they can build those projects which will limit the impact of climate change. The second is that they need technology transfer from developed countries, and they need a market based mechanism for carbon credit, which is also called as clean development mechanism, which was established in Kyoto Protocol. The next is, where is the conference of parties is going to be held? So it is going to be held in Glasgow, and it will start from November 1st, and it is going to focus on making to have all nations to commit net zero, okay, or a year. Now what is the meaning of net zero? See, it is a year by which a country's fossil fuel emission will peak, मतलब वो पीक पे जाएगा, उसके बाद वो नीचे आना चालू करेगा, एंड एट सम पॉइंट इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग आउट एक्सेस कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम देखें तो वी विल जस्ट सी दैट साइंटिस्ट दे आर सेइंग दैट all countries by 2050 they should restrict the average temperature rise to 1.5 degree Celsius. अगर ऐसा हमें करना है तो we should target the reduction of emission by 45% at the 2010 level. Okay, अगर हम इंडिया का NDC देखें तो इंडिया targets emission fall of only 30 to 35%, but for countries like India they can have impact on the development trajectory of India, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं, हमने कोल क्राइसिस के टाइम भी पढ़ा था कि 70% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज बेस्ड फ्रॉम ऑन कोल. सो ट्रांजिशन करना इस वक्त इंडिया का जो डेवलपमेंट गोल्स है उसको इम्पैक्ट कर सकता है. हम आज जो इकोनॉमिक्स के जो पेज पे देखेंगे उसमें भी यही डिस्कस हुआ है कि दैट हाउ ट्रांजिशन फ्रॉम कोल बेस्ड एनर्जी टू रिन्यूएबल एनर्जी कैन लीड टू डिरेलिंग ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट. नाउ the next is that nearly 700 has been detained in Jammu and Kashmir ahead of Amit Shah's visit. So Jammu and Kashmir हम बहुत दिन से करते आए हैं. हम यहाँ पे जानते हैं कि there are two groups. One is the Resistance Front and People's Front against Fascism. They are carrying out targeted civilian attacks. उसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ब्लॉग को डिस्कवर किया था जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स ने जो अपना मॉडस ऑपरेंडी है उसे चेंज किया था. इन दैट ब्लॉग इट वाज रिटन दैट आफ्टर द स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त 2019, नाउ मैनी आउटसाइडर्स हु आर नॉट द permanent residents, now they are coming to Jammu and Kashmir for business purpose, for government service and for work related purpose. They should be targeted, and we have seen that pattern. So the security groups, they are neutralizing those terrorist groups. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि that 700 people they have been detained in Jammu and Kashmir under the Public Safety Act. अब ये Public Safety Act क्या होता है? क्या ये सारे कंट्री में है या सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में होता है? तो इसको समझने के लिए हम इस पैराग्राफ पे ध्यान देंगे कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट होता है ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही है. इसमें एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल. ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि दैट एन इंडिविजुअल कैन बी डिटेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल अगर हिज और हर एक्ट इज प्रेजुडिशियल और डेंजरस टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. Now again this is the news coming from page 1 which we discussed about the climate change. So see, we already know that India is the third largest energy consumer in the world. Now अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें that is Council for Energy, Environment and Water Project, उसने कहा है कि अगर India wants to achieve the net zero target by 2070, बाकी कंट्रीज 2050 तक कमिट कर रही हैं, बट इंडिया को अगर 2070 तक भी अगर नेट जीरो टारगेट करना है, so see the figure which is giving is that the usage of coal will need to peak by 2040. मतलब 2040 के बाद हमें कोल का यूसेज फॉर पावर जनरेशन उसे खत्म करना पड़ेगा. ओके, एंड इट शुड बी नाउ इट शुड बी नॉट मोर देन 1% between 2040 and
2060। उसके साथ साथ हमें क्रूड ऑयल कंजम्पशन को भी 2050 के बाद उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, एंड बिटवीन 2050 एंड 2070 it should not more than 10%. The next is that India UK they have agreed to strengthen their climate initiatives. तो हमने कल के न्यूज़ में पढ़ा था कि इंडिया एंड यूके दे आर जॉइंटली गोइंग टू लॉन्च वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड इनिशिएटिव, OWOSOG. What is this OWOSOG? So OWOSOG is the technique. It is an interconnecting the renewable energy system of the world. So it was propounded by our Prime Minister Narendra Modi. See this news, NIA has arrested 8 more terror suspects in Jammu and Kashmir. So ये जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ये हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो they are the affiliates of the resistance front and the people against fascist forces. People against fascist forces. So this is very important over here. Now this is the news where the यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. क्यों हो रहा है? बिकॉज द यूनाइटेड किंगडम फॉरेन सेक्रेटरी एलिजाबेथ ट्रस इज ऑन अ 3-day visit to India, and already we are discussing the climate change scenario before the COP26, and most of the countries like US and UK they want that India should commit to net zero emission, but India has not given any date till now because of its developmental needs. ओके, बट ओवर हियर अगर हम यूके और इंडिया के अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमने लास्ट कुछ मंथ्स में किया था कि इंडिया एंड यूके नाउ दे आर लुकिंग फॉर अर्ली कंक्लूडिंग ऑफ फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, तो ये आगे चल के एक बड़ा न्यूज़ बन सकता है, एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके इज गोइंग टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड डिफेंस. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम कंटूर्स ऑफ थिएटर कमांड इन द वर्क्स. अब देखिए और थिएटर कमांड क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, पहले हम ये समझते. थिएटर कमांड एम्स टू ब्रिंग इंटीग्रेशन, मतलब एक साथ आना. 3 सर्विसेज हमारी होती हैं डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. तीनों को इंटीग्रेट करना, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना. ओके, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 स्टेप्स लिए हैं. क्रिएटिंग द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स. Who is our incumbent chief of defense staff? So Bipin Rawat is our incumbent chief of defense staff. Now अगर हम इंटीग्रेटेड कमांड की बात करें तो इस वक्त इंडिया में द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कमांड थिएटर कमांड इज द ओनली ट्राई सर्विस कमांड इन इंडिया राइट नाउ. ओके, हम और भी कमांड जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे देयर विल बी सिनर्जी बिटवीन द 3 फोर्सेस अपने बॉर्डर कंडीशंस और आज के थ्रेट परसेप्शंस को देखते हुए. Now over here India Pakistan war of 1971 has been mentioned. ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था 1971 का, इट was the war where after this war Bangladesh was liberated. Bangladesh, which was earlier called as East Pakistan, it became a new country that is Bangladesh. इस वॉर में there was an integration of 3 services. Now हमारा जो थिएटर लेवल कमांड होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द कमांड मॉडल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, रशिया एंड चाइना, और इनके जितने भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम इसे अडॉप्ट करेंगे. नाउ हम बहुत दिन से एक न्यूज़ करते जा रहे हैं अबाउट द LAC. सो द LAC दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये 3488 किलोमीटर लॉन्ग है. इसे हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर. वेस्टर्न सेक्टर मीन्स द एरिया इन लद्दाख. मिडल सेक्टर मतलब हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का वो बाउंड्री जो चाइना से लगता है. देन ईस्टर्न सेक्टर का मतलब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का रीजन जो चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है. राइट नाउ हमने कल इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी किया था कि वाई PLA इज टारगेटिंग दोज एरियाज वेयर देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट अर्लियर. इफ वी टॉक अबाउट द 1962 वॉर, so there was a problem in the western sector of line of actual control, but in recent years we have witnessed that China has now started creating problem in eastern as well as middle sector. कल हमने मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड के एक एरिया का बात किया था, बारहोती, जहाँ पे ये डिसाइडेड था दोनों साइड से कि that nobody in a uniform will go in each other's area, but it has been found that Chinese PLA People's Liberation Army is intruding into that area. Okay, the next area is Tawang in the eastern sector. Tawang is in Arunachal Pradesh and it is a disputed area. Okay, so over here also now
when our Vice President Sri Venkaiah Naidu, when he visited Arunachal Pradesh Tawang, China registered its protest. फिर तवांग में 200 PLA आर्मीज ने इंट्यूट किया था, उसमें से कुछ लोगों को हमारे आर्मी ने डिटेन किया था और बाद में उसे छोड़ दिया. नाउ considering this background, now what India's military has done is that India's military has deployed Pinaka, Smerch long range multi-barrel rocket launch system and BrahMos supersonic cruise missile. ये कहाँ पे इन्होंने माउंट किया है? इन तवांग. सो तवांग कहाँ पे है? तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश. ओके, नाउ सी BrahMos missile, it has a range of 290 km and it gives capability to army to target deep inside the Chinese area. Smerch, which was procured from Russia, it is the longest range conventional rocket system and has the maximum range of 90 km. इसमें there is a battery of 4 launchers. 4 launchers एक साथ होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. 4 launcher एक साथ होते हैं जो 48 rockets 40 seconds में फायर कर सकते हैं. Then we have Pinaka, which is indigenously developed by DRDO, Defense Research and Development Organization. इसकी जो रेंज है वो 38 किलोमीटर की होती है. पिनाका जो है वो 72 रॉकेट्स 44 सेकेंड्स में फायर कर सकती है. नाउ कमिंग टू एयर बबल्स, हम पहले से 2-3 न्यूज़ करते जा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ अलाउड फॉरेन टूरिस्ट टू विजिट इंडिया. हमने कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, विच इज़ द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट. And now we are talking about the air bubble which is going to continue for some time. तो इस न्यूज़ में जो है ये है कि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द कंट्री विल कंटिन्यू अंडर द एयर बबल एग्रीमेंट. ये जो एयर बबल एग्रीमेंट है, इट इज़ द रेसिप्रोकल एग्रीमेंट बिटवीन द 2 countries to start the commercial flight between the 2 countries when there was restrictions on international flight during COVID-19. Fine. अभी तक इंडिया का जो ये एयर बबल एग्रीमेंट है वो एक 28 कंट्रीज के साथ है. नाउ अगर हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बात करें, सो करेंटली कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से इट इज़ नॉट ओनली द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विच इज डिसाइडिंग द इंटरनेशनल ट्रैवल बेस्ड ऑन द एमर्जिंग कोरोना सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड. Ministry of Health along with Ministry of Civil Aviation, they are deciding on whether to restart the air services with a particular country. Now the next is US will defend Taiwan against China. तो यहाँ पे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, दैट इज ताइवान रिलेशन एक्ट 1979. अब यहाँ पे हमें 2 चीज़ समझनी होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस होल इशू, दैट व्हाट इज वन चाइना पॉलिसी एंड व्हाट इज ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 और इसका यूएस से क्या लेना देना है. तो व्हेन देयर वाज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना, the Republic of China government, which was earlier ruling the China, they fled to Taiwan. Okay, and then People's Republic of China, which was the Communist Party, they took over the power in mainland China. Now the mainland China को diplomatic recognition पहले नहीं मिला, पहले ROC को diplomatic recognition मिला था. But in 1979, slowly the PRC, People's Republic of China, it got the diplomatic recognition. So in 1979, US recognized People's Republic of China as the main China under the One China policy. Means then US agreed to One China policy and it started its diplomatic relation with People's Republic of China. But US ने यहाँ पे एक एक्ट पास किया that is called as Taiwan Relation Act 1979, which provides United States with the option to provide weapons to enable Taiwan to maintain sufficient self-defense capability. इसका मतलब कि अगर ताइवान को ज़रूरत लगा, अगर ऐसा हुआ कि ताइवान को डिफेंड करने की ज़रूरत है, then US can come and help the Taiwan. तो यहाँ पे US ने एक डिप्लोमेसी की कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को अंडर वन चाइना पॉलिसी एक्सेप्ट करके डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे दिया, और एट द सेम टाइम ताइवान के साथ भी एक डील किया that they are going to protect Taiwan in future if they are endangered. Okay, the US president has said that this policy of the United States has not changed since. Okay, the next is coming is from 43 countries call on China at United Nations to respect Uyghur rights. तो ये Uyghur कौन होते हैं?
Uyghur are the Turkic Muslims who inhabit Xinjiang province of China or northwest China. यहाँ पे the international community, including the United Nations, they believe that atrocities are committed by the Chinese government against Uyghur. At the same time, China does not allow any foreign delegates to visit the Uyghur region. Okay, so now 43 countries have called on China at United Nations to respect the Uyghur rights. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज कॉल्ड एज देयर इज अ मिलिटेंट ग्रुप इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, दे आर डिमांडिंग द सेपरेट नेशन कॉल्ड एज तुर्किस्तान. ओके, तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है विच आर डिमांडिंग, और यू कैन से सेपरेटिस्ट ग्रुप, द सेपरेटिस्ट ग्रुप इज नेम्ड एज द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट. नाउ कमिंग टू तालिबान एंड अफगानिस्तान न्यूज, हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं. वी विल गो ऑन reading the past news before coming to this. Now we already know that there is United Nations Security Council Resolution 2593 which calls on Taliban to respect the humanitarian rights of minorities, women and children. Second, that Taliban will not allow Afghanistan to become the safe haven for terrorist groups. So these are some of the important demands of United Nations Security Council Resolution 2593. After that, European Union, it provided euro 1 billion humanitarian assistance to Afghanistan. Later on, there was Moscow platform where 10 countries, delegates from 10 countries including India participated, and they assured Afghanistan for humanitarian assistance. Then we had the United Nations Fund for Afghanistan, which was earlier freezed. Now Germany has become the first country to help Afghanistan under that United Nations Fund. Now Pakistan has now advised Taliban that it is prudent to gain validation from the international community. So there was a Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's visit to Afghanistan, where he has asked Afghanistan or advised Afghanistan to gain international recognition. Okay, now energy transition poses inflation risk. So over here, Shri Jayant Verma, who is the member of the RBI's Monetary Policy Committee. So Monetary Policy Committee, whose main aim is to control inflation in the band of 4% plus minus 2%, that is 2% to 6%. Now he has flagged the risk associated with the transition from coal-based energy to green energy, which can lead to significant risk of triggering the energy price shocks. Okay. So right now that is the main concern. There is saying that there is some upside risk to long-term inflation and inflation expectations are no more aggravated. देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फूड इन्फ्लेशन के वजह से कभी कभी इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा रहा है, कभी कभी इन्फ्लेशन 6% के नीचे आ रहा है. बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन की बात करें, विच डज नॉट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल, so the long-term inflation is still very high, which is 5.8% in July-August 2021. So the long-term inflationary trend is still very high. And after that, if we make a transition from coal-based and crude oil-based energy to green energy, so it can lead to energy price shock. अगर energy price increase हुआ, so the production cost will increase, and again the long-term inflation will breach the 6% bandwidth or 6% upper limit. Now again he has called the RBI that to reconsider its accommodative policy. Now what is this accommodative policy? When India was going through downturn during COVID-19 pandemic, then RBI liberalized its monetary policy so that there should be enough liquidity and fund in the market so that private investors can borrow and there should be economic revival. तो ये कैसे अचीव करता है आरबीआई? आरबीआई अचीव इट बाय ब्रिंगिंग डाउन द रेपो रेट. अगर रेपो रेट नीचे आया तो रिवर्स रेपो रेट भी नीचे आता है. नाउ जयंत वर्मा, नाउ ही इज सेइंग दैट वी शुड फॉर नाउ गिव अप द accommodative policy and we should raise the reverse repo rate from current 3.35% to 4%. ठीक है. The next is that SEBI has approved rupees 16,600 crore IPO of payment. It is a one-liner news. The next is this is very important, that in order to boost liquidity in the corporate bond market, SEBI has suggested that there should be the capping of ISIN. Now what is the full form of ISIN?
It is International Security Identification Number code for bonds, and it is used for identifying the securities like stocks and bonds. The next is that the state-run power giant National Thermal Power Corporation or NTPC, it has floated a tender to procure 1 million ton of imported coal after 2 years. ये ऐसा क्यों है? Because we know that there is a rising shortage of coal currently going on due to dip in domestic production and increase in import price. Now let's come to the editorial. So this is the political editorial where the changing political scenario in Punjab has been discussed, especially after the resignation of former Chief Minister Amrinder Singh and appointment of new Chief Minister. The next is about the shorter and shorter, means it is talking about the Indian cricket and the T20 World Cup which is currently being played. So there has been some recent changes. Virat Kohli has declared that after this tournament he is going to step down from the captaincy. The next is that the coaching team is going to be changed, and but still there will be the presence of MS Dhoni as a mentor of this team. The next is about the development course in Kerala. So we are already doing the news that there is a frequent landslide happening in Kerala because of heavy rainfall. So this article is going to discuss that what are the reasons that why we are witnessing the increasing landslide in Kerala. So for understanding that, we have to understand the geography of Kerala. So if we understand the geography of Kerala, so we will see that Kerala, which is the southern state in the Indian peninsula, it is dominated by Western Ghats. So if I just draw the broader Kerala like this, so first of all, if we see the western side, it is dominated by Western Ghats, hilly area totally. Then it is coastal area over here. We have short rivers, okay, and this is the state. Now what is happening is that whenever we have to build roads and railways in Kerala, it has to cut the mountains and rivers for the connectivity. So it destabilizes the slope, and at the same time, whenever there is a heavy rainfall, it leads to landslide. Second is that earlier the settlements in Kerala were concentrated towards the coastal area, but due to increasing population, now constructions are also being taken place in the hilly areas. So this construction, it requires quarrying of stones, it requires building of new structure in hilly areas. All this leads to altering of land use change, which causes this havoc during heavy rains. Then there has been a talk of some projects, for example Silver Line project. So it is a light rail connecting the two extremes, means यहाँ से लेके यहाँ तक it will connect the two extremes of Kerala. Now this is going to crisscross the mountainous region which is ecologically fragile. The next is that is editorial में Madhav Gadgil committee has been discussed. This Madhav Gadgil committee on the protection of Western Ghats, it has not been followed. Then Coastal Zone Regulation Act to protect the coastal area, that has also not been followed to the highest level in Kerala. So there is the need of changing the development model in Kerala for ecological or sustainable development in Kerala. The next is about the clean energy transition plan for India. So over here we are discussing that how can we have the clean energy transition plan for India without disturbing the growth process. So over here the article starts with Electricity Act of 2003, which has ensured that India's generation capacity thermal power station, which has doubled from 94 gigawatt to 192 gigawatt from 2011 to 2017. Then the energy deficit during the peak demand has reduced from 9.8% to 1.6%. But still you can see that right now we are unable to ensure electricity security to most of the country. So if we see the India's energy mix, so here the thermal power plants are the core. So you will see that 71% of the electricity generated are from coal. Okay, therefore coal is going to play a vital role in providing the electricity. Now over here the Sustainable Development Goal 7 has been mentioned, which says that to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. अब यहाँ पे renewable energy
क्या रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी? तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की अभी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का अगर अभी जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम सिर्फ विंड और सोलार को लें तो दैट इज ओनली 25.4% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी एंड दे कंट्रीब्यूट ओनली 10.7% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूटिलिटीज. नाउ द क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड कि क्यों ना रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, बट it is we require new technology for scaling up the electricity generation from renewable energy, and the cost of electricity price will increase, which will in turn make the electricity less affordable. Okay, so what can we do? We can replace the old thermal power plants with high efficiency low emission thermal power plants which are currently underutilized. Okay, so this is one of the strategy which can be adopted. So with the next is that the National Nuclear Power Corporation of India, which has constructed 11 nuclear plants with a total generation capacity of 8,700 megawatt, may also lead to better electricity availability and less CO2 emission. Okay, in that way, if we if we increase the installed capacity of TPPs, so we can ensure that our electricity demand is met, especially during peak period. Okay, so implementing this plant means we should replace the aging thermal power plant with high efficiency low emission thermal power plant. It will have some environmental benefits, like it will minimize the emission of particulate matter, sulfur dioxide, NO2, and it will also have economic and environmental benefits, so we should look for it. Now this fault lines growing deeper in Bangladesh, I will just give you a brief that earlier there was a fake news on social media that Quran has been disrespected in some part of Bangladesh in Chittagong, which led to violence against the Hindu minorities in Bangladesh. So this shows the current situation in Bangladesh, where the fault lines between two religions are growing deeper and deeper. So that's all for today. We will meet again in next week on Monday with the daily Hindu news analysis. Till then, have a happy weekend. Take care. Thank you.